Welcome to the 38th episode for Health for All, which we start this session of Health for All with yoga. So this topic, yoga in monsoon. Now, obviously yoga benefits us all around all seasons. It's not that only in the summer or in the winter, but of course, due to the seasons, like different seasons, there are different benefits that yoga has and different effects that it has in the body and mind. So for the monsoon that we know, there are a lot of different infections and different ways that this weather affects our body and health. And the one reason is that it affects our skin, right? When there is rain and humidity, it affects our skin in more, like many people get breakouts and they get different spottings, and there's a lot of skin problems that occur that I notice personally. Also amongst my students, that they have a lot of skin problems, especially in the monsoon. Along with, of course, you have your mild flus and all of that we just saw the video, that how to differentiate the flu from COVID. And of course, the symptoms are pretty similar, but how do we differentiate that? So for the skin, I would say that you should definitely do a lot of pranayama, a lot of breathing, right? And I've spoken about that in my previous episode with Gayatri. And today we'll be doing a couple of pranayama techniques, that how we can cleanse our nadis, how we can cleanse our lungs, how we can detoxify ourselves, how we can fill our lungs with precious and good air and pump up all the unneeded, unnecessary pollution and all of that from our body. So first we will do one chant and then we will do the pranayama. Okay? So we'll sit with your legs crossed. If you can sit in Padmasana, that is your one foot on your opposite thigh, both your hands, your finger and your thumb into Chin Mudra on your knees, and roll your shoulders. So you're sitting nice and tall with your spine straight. Your eyes are closed. Take a deep breath through your nose. Inhale and exhale. One more deep breath. Really inhale and exhale. And we will do one chant, Om chanting. So inhale and exhale, Om. Om. Om Trayambikam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mirtyo Mukti Ana Amrita. And slowly rub the palms together and take to your eyes. And slowly open the eyes into your palms and do your face and rest of the body. Now the next session is another important session after the yoga one, and this is on tribal health, livelihood and women empowerment. डॉक्टर्स कम्युनिटी को क्या करना चाहिए इसके लिए कि उन तक ये हेल्थ केयर जो ट्रेडिशनल नहीं, जो आज का मॉडर्न हेल्थ केयर है, वो उन तक पहुंच सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं एट द मोमेंट, ट्राइबल लोगों के साथ।
क्या हो रहा है कि जैसे मैंने ट्यूबिकुलोसिस मेंशन किया इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन लोगों का सिकल सेल एनीमिया वहां पे बहुत रैम्पेंट है। सिकल सेल एनीमिया तो पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्कीम्स आए थे, बहुत सारे एंटाइटलमेंट्स आए थे, तो डॉक्टर्स बोले कि हम लोग एक सिकल सेल यूनिट खोलेंगे कोरापुट में फॉर एग्जांपल। वो 2016 में वो लोग प्लान किए थे, लेकिन वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया। क्योंकि एक चीज होता है कि इन लोगों के ग्राम पंचायत के जो फंड्स आते हैं, वन ऑफ द मेजर रीजन जो आप पूछ रहे हैं, इन लोगों के जो ग्राम पंचायत के फंड्स आते हैं, इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। People don't even know that there is a certain fund for these units to be constructed or to materialize. उन लोग के पास मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इन लोग के पास ऐसे फंडिंग है करके। अब वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो फंड्स कैसे मतलब उन लोगों से whether it's being utilized or not, उन लोगों को पता भी नहीं है। तो अगस्त 2016 में एक स्टडी आया था जहाँ पे वो लोग भुवनेश्वर से ऑर्डर लाए कि they will open a sickle cell unit in कोरापुट specifically, लेकिन वो कभी भी हो नहीं पाया, वो materialize नहीं हो पाया ठीक से। So a lot of these things are one of the major, क्योंकि उन लोगों को पता भी नहीं है कि they are entitled to this particular scheme हो या health का scheme हो या social entitlement, they don't even have an idea. So that is where हम लोग उन लोग को बोलते हैं, in convergence with the government, in licensing with the government, we tell them what they are entitled to. The Niyamgiri hill range in Odisha, which is close to the way you work, is home to the Dongirakhond tribe. The tribe respect nature and worship the mountain god Niyam Raja and the hills he presides over, including the 4,000-meter mountain of law called the Niyam Donga. Since the area is rich in natural resources, there were efforts to mine some of the minerals which the tribes resisted tooth and nail. What is the status now, their health and their economic status? Yes. So coming to the health and economic status of tribals in particularly in Koraput district, तो जो मतलब हेल्थ का तो ये इश्यूज है ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरापुट इज कम्प्लीटली अ फॉरेस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, फॉरेस्ट डोमिनेटेड एरिया। तो यहाँ पे कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे आज भी रोड्स नहीं बने हैं, तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच नहीं पाती है। एम्बुलेंस पहुंचना तो दूर की बात है, उस एरियाज में नेटवर्क्स नहीं आते, जिनके चलते जो है वो डिजिटल जो डिवाइसेस है उनको वो यूज नहीं कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन से भी वो कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। तो टाइमली जो है उनको मेडिसिन नहीं मिल पाता, टाइमली वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं अवेल कर पाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट एक ये भी है कि मेडिकल फैसिलिटीज को वो अप्रोच, कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो अपने तरफ से अप्रोच करना नहीं चाहते हैं। उनका जो ओल्डर जनरेशन ट्राइबल्स है वो ये बिलीव करते हैं कि किसी लोकल बाबा, किसी तांत्रिक के पास चले जाएं, और मेडिकल फैसिलिटीज पे पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि हम किसी तांत्रिक के पास जाके वो कुछ मंत्र पढ़ देगा और हमारा तबीयत जो है ठीक हो जाएगा। ये इस टाइप की कुछ मेंटालिटीज भी है, जिसके चलते भी जो है उनका हेल्थ इफेक्ट होता है। और रहा बात माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, ये सारी चीजें तो ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन में चाइल्ड मैरिजेस, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है, जिससे भी जो है वुमेन एंड चाइल्ड के हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कमिंग टू द इकोनॉमिक पार्ट, ये यहाँ के जो ट्राइबल्स है कोरापुट के, बेसिकली इनके दो टाइप के प्रोफेशन बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। पहला एक है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो छोटे मोटे खेती करते हैं ये लोग अपने, और इसको काफी कम अमाउंट में ये कम्प्लीटली जो भी एग्रीकल्चर करते हैं ये अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, और उसमें से अगर कुछ बच जाता है तब वो उसको सेल पे लेके जाते हैं। ये इनका एक पर्सपेक्टिव है एग्रीकल्चर करने का। और यूजुअली वो लोकल सीड्स को ही सो करते हैं, उसी से वो अपना खेती करते रहते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, और अगर अमाउंट कुछ बच जाता है तो उसको फिर वो नियर बाय लोकल मार्केट्स पे या फिर बाटा सिस्टम के थ्रू उसको वो बेच देते हैं हाउस होल्ड्स में। और दूसरा प्रोफेशन ये आता है ट्राइबल पॉपुलेशन में कि वो ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे कोरापुट में जो है दे आर NTFP गैदरर्स। NTFP गैदरर मीन्स नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स। तो ये यहाँ से भी ये कहीं ना कहीं अपना इनकम जनरेट करते हैं NTFPs कलेक्ट करके और इसको नियर बाय मार्केट्स में सेल करके। We move on to a very, very special segment. July 1 was Doctors Day. एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि ये बीमारी
मरीजों को ज्यादा समय नहीं देता। इस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं आप? लाइफ डेफिनेटली हर प्रकार के चैलेंजेस से फुलफिल्ड होती है, लेकिन उन चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना ये एक अच्छे डॉक्टर का काम है। एंड ऐसे समय पर जब ये जो हार्ट की बीमारियां ये एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है, और स्पेशली जो हार्ट अटैक है 25% पेशेंट्स आर अकरिंग बिटवीन 18 to 35 ईयर्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन इज द टूल। और इसको मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूँ। Most of the doctors, including me and all of us, the job that we are doing, जो कार्य हम कर रहे हैं वो किसी झाड़ू पोछे वाले से अच्छा नहीं कर रहे हैं। What is happening is कि बीमारी बढ़ती चली जा रही है और हम उसका इलाज सर्जरी के द्वारा, एंजियोप्लास्टी के द्वारा, दवाई के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ध्यान किसी के मन में नहीं आता कि यदि हम नलके को बंद कर देंगे तो जमीन गंदी होनी बंद हो जाएगी। वो नलके को बंद करना यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर लेना, उसको इनकलकेट करना, इसको मास मीडिया के द्वारा, ऐसे माध्यमों के द्वारा, लोगों के द्वारा इसको पब्लिसाइज करना, यही एक बहुत बड़ा जो टूल है, जो चैलेंज है, जिसको आज हमें साकार कर रहे हैं। The earlier concept of family doctor was that the family doctor knew everyone in the family and he was part of the family. He knew the father, the wife, the mother, the daughters, and their marriageable age, their education. It was such a very personal bond that he built up with the patients. As a result of which, they had a lot of confidence in this particular doctor. Now, has this concept vanished, and do we need to bring it back? If so, how? Yes, I would say yes. We are losing the touch with our patients because the concept of family physician is a little bit going at the back seat, and we need to undo it actually. Okay, so we have to just Dr. Kesri also emphasized this fact that the family physician previously were very active with the patient. They used to name the whole family's name, and they used to know what are the particular disease prevalent in that particular family, and we have a bondage, emotional bondage, that is very, very important. And we have to revive it, and we have to correct this imbalance actually between specialization and the MBBS doctor. And this is a worldwide phenomena that specialization is getting more attention. Okay, कि हमारा MBBS डॉक्टर जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, वो हमेशा सुपर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहते हैं। ओके, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सब डॉक्टर के लिए कि सबसे पहले जाना कि दे आर MBBS फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड 5 to 7 years if it is practiced in a community like प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वो बेसिकली हमारा बेस बन जाता है। ओके, और जैसा कि प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया कि ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन ए रिमोट एरिया वेयर ही कम टू नो अबाउट द पेशेंट्स क्लोजली, तो वो कॉन्सेप्ट हमें रिवाइव करना पड़ेगा। और जैसा कि हम खुद जानते हैं कि हमें भी किसी ने ट्रीट किया था। ओके, और हमारा भी कोई गोल्ड स्टैंडर्ड डॉक्टर था अपनी लाइफ में, और हम एक और या दो ही डॉक्टरों को दिखाते थे पूरी फैमिली, और उससे हमें बहुत ज़्यादा जो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ओके, और जैसा कि अब क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये प्रूव हो चुका है कि 70% जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक है। ओके, यदि हम पेशेंट को रीअश्योर कर देते हैं कि आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या डिस्लिपिडीमिया बहुत ज़्यादा है और वेट प्रॉब्लम है, यदि हम एश्योर कर देते हैं उसको कि एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, बट यू हैव टू फॉलो अस वेरी प्रिसाइसली। ओके, तो वो एश्योरेंस ही बेसिकली क्या उसके आउटकम को बढ़ा देता है। तो मेरा एक सिंपल सी बात है कि रीअश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो फैमिली फिजिशियन में हमें देखने को मिलती है। तो हर स्पेशलिस्ट भी एक फैमिली फिजिशियन है इनफैक्ट आज के ज़माने में, और उसको पेशेंट के साथ टच बनाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान लगभग 2 साल डेंटल हेल्थ केयर बुरी तरह प्रभावित रहा, ज्यादातर क्लिनिक बंद रहे, उसके बाद भी उस पर प्रभाव रहा। आप ओवरऑल डेंटल हेल्थ केयर पर क्या प्रभाव पड़ा? जो लोग ये कोविड लॉकडाउन में अपना ओवरऑल ध्यान रखते रहे,
उनको जो है डेंटल बीमारियां या डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कम हुई। और जो लोग ये सोचते गए कि हाय हाय ये सब बंद है, हाय हाय ये सब नेगेटिव है, उनके जो है डेंटल केयर्स की जो है वो निग्लेक्टेड रहा, और बहुत कम या कोई भी क्लिनिक ना ओपन के कारण या फियर के कारण उनके जो है जो कैविटीज थी या गम्स की प्रॉब्लम थी वो सब बढ़ती गई। तो जैसे 35 मिनट्स एक्सरसाइज का डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे ही 35 मिनट्स नहीं, मैं तो केवल 3.5 मिनट्स की गुजारिश करता हूँ सभी से। तो डेंटल केयर पे अगर जो इंसान अपने 24 घंटे में से 3.5 मिनट्स या 4 मिनट्स निकाल दे तो फिर उनकी डेंटल केयर काफी अच्छी संभल सकती है। ऑफ कोर्स डाइट पे भी डिपेंड करता है कि हम जो है चिपकने वाली चीजें या मीठी चीजें या ऐसा ही खा के सो जाए तो कुल्ला वगैरह ना करें, ब्रश ना करें, ये सब जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके ऊपर ध्यान दें। तो डेंटल केयर में इसेंशियली ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और डेंटल फ्लॉस जो है इसका अगर जो ध्यान रख लें तो फिर जो है ज्यादा खराबी आने की नौबत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो या तो पेन हुआ तो पेन किलर के सहारे चलाते गए, या फिर उनको हुआ तो हम कोई टेलीफोनिक की प्रिस्क्रिप्शन उनको बताते गए। जो इंटरवेंशन प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ी वो शायद उनको मुहैया नहीं हुआ। बट ओवरऑल लगभग सभी ने इस पीरियड को किसी न किसी तरह निकाल ही लिया, और बाद में जब डेंटल केयर ओपन हुई तो फिर उसकी जो है taken care of वो चीज aspect हो गया। Doctors being gods, that was a concept which was there in the 80s, which where they people who didn't have access to medicine and did have access to gods finally had access to doctors. So that was the first line of the god that they met, and they had this god in front of them. And it was also used for covering up some of the controversies, like the medical college issue, the Consumer Protection Act, the kidney issue. All these things were used, and then you had a lot of films saying that this is Bhagavan in white coat. But then what happened now is that this family doctor is all gone, and then you have commercial establishments coming. So the general concept now is that if you go to a doctor, you will not only lose your patients, but also you lose your money. And so there is a general concept that some of the institutions, I would not say all, some of the institutions are actually exploiting the patients. So what's your view? It just struck me about 30 years back in time. I'll just, very interesting anecdote. Actually, what I have experienced over the years, as I think Dr. Rajesh also got quite worked up when he was asked that whether doctors are gods and there is a alternative view. What I think, there are cultural barriers among the urban, among the educated, among the medical college. We move in a particular cultural environment, and we think and we do our best. There is no doubt that doctors work 24/7. They put their life at risk. But across the cultural barrier, this is not conveyed to 70% of our people coming from different regions, particularly the rural areas. They have got a different ear, and when they come to the doctor, sometimes the doctor is very busy, as brought out by Dr. Mohit also, that they do not have time to educate the patients, where the role of the family doctor comes. And that is a species which is gradually disappearing because everybody is going for specialization. So we require to improve the institution of the family doctor. We have to think. And in fact, I was just a plain MBBS 30-40 years back when I had joined the army as a young doctor. And that time we used to practice as a family doctor only, 3-4 years. And I thought I am communicating very well to my patients, which were the troops. We had a OPD. As a general duty medical officer, I used to run my OPD in the morning. I had an office as a separate OPD away about 2 kilometers from the military hospital. And I was a young doctor, and I used to finish my OPD very fast and go to the military hospital to practice anesthesia and other things which I was interested in, the OT and holding the knife, as you said. So I used to think that is the actual technological medicine. So I used to hurry up my OPD and go to the hospital. That was 34, somewhere in the northeast in Nagaland. So one day I was walking in the evening. In the evening, I saw a long queue, and I was seeing that I am treating my patients very well. In the OPD, I used to prescribe the correct medicine, give them whatever, and hand it over to my nursing assistant, medical assistant. So one day, and it was a South Indian Madras regiment,
So there was a language barrier also. So I used to talk in English, Hindi, they never used to understand. They used to talk something I never used to understand. But I used to think I am doing the correct practice. I thought I am God to them. So one day evening, I was taking an evening walk, and suddenly I see a long queue in front of my office. I was in civil dress, nobody recognized me. So I walked up to the back of the queue. I said, "What's happening here?" He says, "The doctor is inside, he is seeing patients in the evening." I said, "Okay, but the doctor comes in the morning." He says, no, the one who comes in the morning is no good. The evening one is very good. I was this was curiosity. I was surprised कि यार evening में कोई बड़ा super specialist आया होगा. So I just peeped to the window and peeped in. And I saw my nursing assistant, he is explaining in the language. He was from South India. He was taking my prescription in the morning, and he was explaining to the patients about lifestyle, about rest, about food and exercise, all those things. Then I realized that even MBBS knowledge is too much. I think is not enough to communicate to people from a different cultural background. So that was an eye opener to me. एक फैमिली डॉक्टर के रूप में डायबिटोलॉजिस्ट की भूमिका बड़ी अहम होती है. उनके डायबिटीज को नियंत्रण में भी रखना है और कोविड जैसे इन्फेक्शन से भी बचाना है. क्या अनुभव रहा आपका? आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी फैमिली डॉक्टर की भूमिका, खासतौर पे आजकल के दौर में जब बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जब ऐसा समय भी आया, कोविड का दौर आया, जब मरीज घर से बाहर नहीं निकल सकते और ज़्यादातर इलाज इन 2 सालों में, ये करीब 1.5 सालों में टेली कंसल्टेशन में हुआ. तो इस दौर में फैमिली डॉक्टर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम रही है, क्योंकि फैमिली डॉक्टर वो डॉक्टर है जो मरीज के पूरे संपर्क में रहा है, सालों से मरीज की बीमारियों को जानता है. और फिजिशियन की भूमिका केवल कोविड के दौरान ही नहीं, हर समय फिजिशियन की भूमिका बहुत ही अहम होती है. ये सब हमको समझना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों का जो है, अगर शुरुआत में इलाज हो जाए, सही और उचित इलाज हो जाए, तो बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सही इलाज हो जाता है, उनका आउटकम अच्छा होता है और जो मरीजों को नुकसान होता है, जो आहत होती है या जो उनका खर्चा भी होता है, जो कॉस्ट होती हैं, अगर सही समय पे बीमारी को पकड़ लिया जाए, उसका इलाज करना शुरू कर दिया जाए, और अगर ये इलाज फिजिशियन खुद नहीं भी करते तो कम से कम फिजिशियन का हम बोलते हैं एक रेफरिंग इंस्टीट्यूशन, जो सही रास्ता दिखा सकते हैं मरीजों को कि अब ये स्थिति आ गई है, ये बीमारी है, तो आगे हमें ये करना चाहिए. तो ये अनफॉर्चुनेटली जो फिजिशियन की भूमिका है, अभी जो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस है, खासतौर पर बड़े शहरों में, ये कुछ कम होती जा रही है और इसका सभी लोगों को, मरीज को, सोसाइटी को बहुत नुकसान हो रहा है. आजकल देखिए, लोगों का पेट दर्द भी होता है तो वो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर होल बॉडी चेकअप कराते हैं, और पेट दर्द होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाके दिखाते हैं. मैं नहीं कह रहा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मान लीजिए कोई भी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हमारे अभी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों के पास इतना पेशेंट बर्डन, इतना लोड होता है कि जब छोटी छोटी चीजें जो घर बैठे आराम से ठीक हो जाती हैं, उसके लिए भी जब पेशेंट ऐसे लोगों के पास जाते हैं, unnecessary burden creates. What should be the 3 qualities that a doctor should possess? So the first and the most important thing is doctors must learn the art of listening. सुनते ही नहीं, खांसी है, सर दर्द है, अरे CT करो, BT करो, TT करो. 90% of your diagnosis is made on the basis of history. 90%. 5% is made on clinical examination. I have a panel of doctors here. Tell me how many do clinical examination? How many listen to their patient's complete history? 3% is done on routine laboratory examination and 2% on CT, BT, TT, MT, MRI. So my first and most important message is learn to listen. Number 2, हमारे शो के अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बैनर्जी. He said very important thing. 5 important disciplines should be taught to the doctors. Anthropology,
psychology, sociology, politics and economics. These are called behavioral sciences. Unless and until you understand the perspective and the culture the patient comes from, you will not be able to communicate to him properly. That's number 2. Number 3, somewhere in the discussion, someone used a very important point: reassurance. Reassurance. Prescription में reassurance लिखने वाले बहुत कम डॉक्टर हैं. एक पल्मोनोलॉजिस्ट के रूप में आपको और आपका परिवार हमेशा इन्फेक्शन के खतरे के दायरे में रहता है. कोविड और नो कोविड का हमेशा रहता है. आप तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों को भी देखते हैं. तो कैसे बचाव करते हैं? खुद का भी, परिवार का भी कैसे? बहुत ही मुश्किल चीज होती है खुद का और परिवार का इन बीमारियों के बीच में बचाव कर पाना. बेस्ट पार्ट जो है प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं कि बीमारी कम से कम फैले. क्लिनिक में हम लोग अब कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट मास्क पहन के आए और खुद भी हम लोग मास्क पहन के रहते हैं. पेशेंट को बहुत इंसिस्ट करते हैं कि वो मास्क नहीं उतारे. कई जो पेशेंट होते हैं जो कि सिर्फ अपनी जो है चेहरे की यहाँ पे मास्क लगाए रहते हैं, अपना मुंह कवर करते हैं, लेकिन उनकी नाक खुली रहती है. तो उनको ये चीज़ समझाना कि उनको पूरा मास्क लगाना है, पूरा फेस कवर होना है, खांसना कम से कम है. इन चीज़ों से बीमारी का फैलना हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं. हॉस्पिटल जाते हैं, राउंड्स करते हैं, कपड़े सब हम लोग के गंदे होते हैं. हम लोग फोमाइट्स होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस जो कि हमारे कपड़ों के ऊपर बैठा होता है. कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल से जब भी वापस आए अपने कपड़े अलग रखें. एक नीचे अलग वॉशरूम बनाया, बाथरूम बनाए हुए हैं जिसमें ये अलग से हम लोग जाके पहले शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद घर में घुसते हैं. उसके बाद इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हम लोग को इन्फेक्शन हो जाए और कोई भी सिम्टम आए तो अपने को सेल्फ आइसोलेट करें, ना कि फैमिली साथ रहते रहें, बैठे रहें और सबको इन्फेक्शन हो जाए. तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को करने की जरूरत पड़ती है. इसके बावजूद भी हम लोग जब वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सबको फैलने से बचा पाए. With the onset of remote monitoring gadgets and telemedicine, do you feel the family doctor has come back in a new avatar? Because now there is a lot of contact with patients. You know that people very well because you're remotely monitoring them. They read data immediately. So has this modern concept of AI and telemedicine, remote monitoring changed the concept of a family doctor? Well, sir, yes. Actually, it was a bit baffling, why this whole concept of a family doctor went out of practice to begin with, because it is one of the most important links in the healthcare scenario. Like one of our previous speakers was mentioning, the role of a physician at a grassroots level cannot be overemphasized. We see patients coming to us with breathlessness and cough, and they've just walked in. They've not been through their physician. And many times, patients come and say, "Arey, hum heart ke subah se sham tak we are just roaming in the hospital. Everyone is sending us to the other person." Now, these kind of things can be avoided if you go and consult your physician first, and then he has a complete screen of you, and then he can guide you as to which specialist you need to go and see. Instead of you going to the cardiologist saying, "Arey, nothing is wrong," go to the pulmonologist saying, "Nothing is wrong," go to the gastroenterologist. And many times we suggest, patients come with some kind of atypical pain, we do an ECG, we say, "There's nothing wrong with you, please go consult a physician." Patient will still not go to a physician. They'll go to a pulmonologist or a gastroenterologist. Once again they get directed to a physician and they'll still not go. So this concept of the family physician coming in is something that is really good news for public as well as for the medical fraternity. Because what happens is, at the end of the day, we don't end up we are able to give time to a lot of patients who really deserve the time, because a specialist is generally overburdened with so many patients that when you see somebody who comes in with atypical pain, you do an ECG, everything is fine, you're not able to give them that much time and talk to them and counsel them. As sir was just saying, we need to listen, we need to talk to them, we need to give them time. But then when you're having a patient on the cath lab table, when you're having an MI in the ER, and then you're sitting in front of a patient who has absolutely nothing wrong from the cardiac side in front of him, every extra minute you give to him, trying to tell him there's nothing wrong with him, when it can easily be done by a primary physician at the same time. So
these things will really help in streamlining practice. And a lot of these patient complaints, Carrie, we went to the doctor and the doctor didn't listen to us, will start coming down if we establish that hierarchy in our setups as well, which is sorely lacking. You see one of the major differences between the healthcare system in India and the healthcare system in the West is that there you cannot bypass the hierarchy. You have to go through your family physician, your GP, your internist, and then you land up with a specialist.